Good morning, students. Welcome to SST's class. As we completed our second lesson, today in this class we are going to start our third lesson, that is our country, India. And in this lesson, we will learn about physical divisions of India, the Himalayas, northern plains, coastal plains, desert region, Indian peninsula and the islands. So first we will read it. Do you know the name of our country? Tell me. India is our country. It is also known as the Bharat. India is a big and beautiful country. It is the seventh largest country in the world. India is the second most populous country in the world. Over 130 crore people live in India. China, which is our neighbor, has the largest population in the world. While China is the largest country in Asia, India is the second largest country in the Asian continent. From the north to the south, it is about 3,200 kilometers long, and from the west to the east, it is about 3,000 kilometers wide. It has many mountains, ranges, rivers, and the plains. So, can you tell me the name of our country or in which country we live? India is our country, right? India is our country and we live in this country, India, and which is also known as the Bharat. India is our country and India is also known as the Bharat. इंडिया इज़ अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल कंट्री. जो हमारी कंट्री है इंडिया जिसमें हम रहते हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. हाउ, कैसे? बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सिटीज़, लॉट्स ऑफ स्टेट्स आर देयर, राइट. बहुत सारे स्टेट्स हैं, उसमें हज़ारों शहर हैं, बड़ी सिटीज़ है, छोटे गांव हैं. तो जो भी लोग हर जगह पर रहते हैं वो क्या है, एक दूसरे से अलग हैं. मीन्स उनके कपड़े पहनने का स्टाइल अलग है एक दूसरे से. जो द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं वो भी एक दूसरे से अलग होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट. हर स्टेट में या हर डिफरेंट स्टेट्स में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं वो भी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है. सो दैट इज़ वाई इंडिया इज़ नोन एज दी वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल कंट्री. बिकॉज जो भी लोग हर जगह पे रहते हैं वो क्या है, एक दूसरे से अलग हैं. द क्लोथ्स दे वोर, the food they eat, and the festivals they celebrate, they are different from each other. That is why it is known as the India is very big and beautiful country, and it is the seventh largest country in the world. India is the seventh largest country in the world means इंडिया पूरे वर्ल्ड में सातवीं सबसे बड़ी कंट्री है. इंडिया का रैंक कौन सा आता है, सेवेंथ. अगर हम बात करें लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सो इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. India is the second most populous country in the world. If we see population wise, then it is the second rank. India has the second rank if we see the population wise. Now what is the population? अगर हम देखें इस हिसाब से कि एक कंट्री में कितने लोग रहते हैं, उस हिसाब से इंडिया का रैंक कौन सा आता है पूरे वर्ल्ड में, सेकंड रैंक. इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें कि एक कंट्री में कितने लोग रहते हैं तो उस हिसाब से इंडिया का रैंक पूरे वर्ल्ड में सेकंड आता है. इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. ओवर 130 करोड़ पीपल लिव इन इंडिया. इंडिया में कितने लोग रहते हैं, ओवर 130 करोड़ पीपल लिव इन इंडिया. सो इट इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दी वर्ल्ड. चाइना विच इज़ अवर नेबर. चाइना ये एक और कंट्री है जो हमारा पड़ोसी देश है, राइट. चाइना विच इज़ आवर नेबर कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. चाइना की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है, राइट. रिमेंबर, चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है वो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पर आता है. एंड उसके बाद इंडिया आता है जिसका सेकेंड रैंक है पॉपुलेशन वाइज. While China is the largest country in Asia, India is the second largest country in the Asian continent. In our previous lesson, we have already studied there are 7 continents in the world, and in that Asia is the largest continent. So China is the largest country in Asia. China सबसे बड़ी country है in Asia, and India is the second largest country in the Asian continent. चाइना सबसे बड़ी कंट्री है एशिया में एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द एशियन कॉन्टिनेंट.
From the north to the south, it is about 3,200 kilometers long. In our previous lesson, we have also studied about the directions. So there are four main directions: north, south, east and the west. So north is always on the top, and in bottom there is the south. So when we see from the north to the south, the India is about 3,200 kilometers long. When we see from the north to the south, it is about 3,200 kilometers long. And when we see from the west to the east, it is about 3,000 kilometer wide. लंबी कितनी है? 3,002 kilometers long. And wide means चौड़ी कितनी है? चौड़ाई में 3,000 kilometers wide from east to west. It has many high mountain ranges, rivers and the plains. अब इंडिया में पूरी जगह पे मीन्स सिर्फ प्लेन एरिया नहीं है, वहाँ पे क्या है? माउंटेन्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, डेजर्ट भी है, ये सारी चीज़ें भी रहती हैं. सो इंडिया हैज़ मैनी हाई माउंटेन रेंजेस, रिवर्स एंड दी प्लेन्स. डू यू नो the three most populous countries in the world? So these are China, India and USA. These three countries are the most populous countries in the world. When we see the population wise, these three countries are the most populous countries in the world. First is China, second is India and third is USA. USA means United States of America. So let us study the physical divisions of our country on the map. Physical division means physical features of India, because I told you there is not only the plain area all over the world, or in our country there are mountains, there are plains, there are plateaus, deserts and the islands also. So this is known as the physical divisions of India. So let's see the map. It shows the physical divisions. Brown color shows the mountains in the map. So can we see the names? There are different names are written here in the map. So in brown color we see Byas, Satluj and Indus. So these are the mountain areas in the map. The second one, with the help of light green color, this is shown the plains like Yamuna, Ganga, Gomti. These are the plain areas. The third one, which is shown by the dark green color, these are the coastal plains. Coastal plains means the areas which is near the water bodies. This is known as the coastal plains. The pink color shows the plateaus. So there are different names written in the pink color like Narmada, Tapi, Bhima, Godavari, Indravati, Mahanadi. So these are the plateau area in the map. And the last one, yellow color, shows the desert area. So these are the physical divisions of India. With the help of these different colors, we will understand the different things in the map. Like brown color shows the mountains, green color shows the plains, pink color shows the plateaus and the yellow color shows the desert. So these are the physical features and the physical divisions of India. So today we will stop here. We will see the next topic in our next video. Have a good day.